हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो भी सिंसियरली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपना जो हार्ड वर्क है उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। हम लोग एक महीने में 25 पीडीएफ्स देते हैं जिसका कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़। और इसके सिवा आप हमारे टीचर्स से बात कर सकते हैं 1-to-1। जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में आने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 7409287156। मैं वेट करूंगी आप लोगों का। टिल देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to talk about Arundhati Roy. Arundhati Roy's full name is Susanna Arundhati Roy. She was born on 24 November 1961. उनका जो जन्म हुआ था 24 November 1961 में हुआ था. And she is best known for her novel The God of Small Things 1997. इसके बारे में हम बात करेंगे. And this is her best known work. And this work won the Man Booker Prize for Fiction in 1997. तो 1997 में मैन बुकर प्राइज जो था वो भी अरुंधति को मिला था फॉर दिस वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन 1997 and became the best selling book by non-expatriate Indian author. She is also a political activist भी हैं involved in human rights and environmental causes. अर्ली लाइफ की बात करें तो शी वॉज बॉर्न इन शिलोंग मेघालय इंडिया टू मैरी रॉय एंड राजीव रॉय उनके पेरेंट्स थे एंड राजीव रॉय वॉज अ बंगाली हिंदू टी प्लांटेशन मैनेजर फ्रॉम कैलकाटा बट द मदर मैरी रॉय मलयाली सीरियन क्रिश्चियन वुमन. Later, her parents divorced and she returned to Kerala with her mother. And there she lived with Roy's maternal grandfather. And when she was 5, she moved back to Kerala with her mother. And her mother started a school. Roy attended school at Corpus Christi, Kottayam, followed by the Lawrence School, Lovedale in Nilgiris, Tamil Nadu. उन्होंने जो एजुकेशन उनकी हुई कॉपस क्रिस्टी एंड लॉरेंस स्कूल लवडेल में हुई थी. शी देन स्टडीड आर्किटेक्चर एट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली वेयर शी मेट आर्किटेक्ट जेरार्ड डा कुन्हा. वो इनसे मिली एंड द टू लिव्ड टुगेदर इन दिल्ली एंड देन गोवा बिफोर दे सेपरेटेड. पर्सनल लाइफ. In short, we can say she returned to Delhi and there she met Pradeep Krishnan and then they married and got separated again. They got separated and she became financially secure when she got the prize and Man Booker Prize for her novel The God of Small Thing in 1997. So in short, you can remember the names so that you can write down these things in your exam. Roy is a cousin of prominent media personality Pranay Roy, the head of the Indian television media group NDTV, and she lives in Delhi. So she also started her career as television and movies. And with Pradeep Krishnan, we know that she worked for movies and other things. But finally, the novel secured herself financially. The God of Small Things. Roy began writing her first novel, The God of Small Things, in 1992, completing in 1996. तो उन्होंने अपनी जो बुक शुरू की थी 97 में, उन्हें इसके लिए मैन बुकर प्राइज़ मिला था. उन्होंने इसे शुरू जो किया था वो 1992 में किया था और कंप्लीट 1996 में किया था. द बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है. अ मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन अयामन. सो एमानम में उन्होंने जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, तो चाइल्डहुड उनकी जो भी मेमोरीज थे, एक्सपीरियंस थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा. द पब्लिकेशन ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कैटापुल्ट रॉय इन इंटरनेशनल फेम. और ये जो नावल था
उसके बाद वो बिल्कुल इंटरनेशनल फेम उन्हें मिलना शुरू हुआ था. And the most important fact that it received Booker Prize for fiction in 1997 and was listed for one of the New York Times notable book of the year. Now, if we talk about the later career, since the after becoming this novel a great success, Roy has written a television serial, The Banyan Tree, and the document Dam is a film with Arundhati Roy, 2002. And the early 2007, Roy attended that she was working on a second novel, and she contributed to We Are One, a celebration of tribal people book released in 2009 that explores the culture of people around the world, portraying their diversity and threats to their existence. Now, the important part of a writer for TGT PGT level, the bibliography you need to remember: The God of a Small Thing, The Ministry of Utmost Happiness, some of the non-fiction she wrote, The End of Imagination, The Cost of Living, Greater Common Good, Algebra of Infinite Justice, Power Politics, War Talk, An Ordinary Person's Guide to Empire, Public Power in Age of Empire, The Checkbook, and The Cruise Missile, Conversion with Arundhati Roy. The Shape of the Beast, Conversions with Arundhati Roy, Listening to Grasshopper, Field Notes on Democracy, Broken Republic, Three Essays, Walking with the Comrades, and Kashmir, The Case for Freedom, The Hanging of Afzal Guru, and Strange Case of Attack on Parliament, Capitalism, A Ghost Story, Things That Can and Cannot Be Said, Essay and Conversations with John Cusack, The Doctor and the Saint, Caste, Race, and Annihilation of Caste, The Debate Between B.R. Ambedkar and M.K. Gandhi, My Seditious Heart, Collected Nonfiction, Azadi, Freedom, Fascism, and Fiction. The God of a Small Thing. The God of a Small Thing is the debut novel of Indian writer Arundhati Roy. So Arundhati Roy की debut novel है. It is a story about the childhood experience, तो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, of fraternal twins whose lives are destroyed by the love laws that lay down who should be loved and how much. So this is the story of two twins. The book explores how the small things affect people's behavior and their lives. और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं. The book also reflects its irony against casteism. तो casteism के बारे में भी इसमें लिखा गया है, which is a major discrimination that prevails in India. It won Booker Prize in 1997. काफ़ी बार बात कर चुके हैं, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा. The God of Small Things was Roy's first book and only novel until the 2017 publication of the Ministry of the Utmost Happiness 20 years later. So उनकी जो next novel आई थी, The Ministry of Utmost Happiness 20 years later, 1997 के बाद में. She began writing the manuscript of The God of Small Things in 92 and finished in 96. It got published in 1997, we know. If we talk about the plot summary in detail, so the story is set in Aminum. This is the place जहाँ पे वो रहे अपने childhood time पर. Now part of Kottayam district in Kerala in India. The temporal setting shifts back and forth between 1969 when fraternal twins राहेल है आपकी गर्ल एंड स्तपन जो है वो है बॉय और 7 years old, और दोनों की ट्विन हैं और 7 years के हैं. And 1993 when the twins are reunited. Amuep is desperate to escape
her ill-tempered father known as Papachi. तो इसमें अमो ऐप है दूसरा कैरेक्टर, और उसका इल टेपर्ड जो फादर है वो है आपका पापा जी, एंड हर बिटर लॉन्ग सफरिंग मदर नोन एज मामा जी। तो पापा जी तो फादर है, मामा जी जो है वो मदर है। शी persuades her parents to let her spend a summer with the distant aunt in Calcutta, और वो अपने आंट के पास चली जाती है टू अवॉइड रिटर्निंग टू एमिनम। और वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है कलकत्ता अपनी आंट के पास, और वो वापस नहीं आना चाहती है। शी मैरीज अ मैन देयर बट लेटर डिस्कवर्स दैट ही इज़ एन अल्कोहलिक, और उसके जो फादर है वो भी क्या है? अल्कोहलिक है। सॉरी, उसका जो हस्बैंड है वो भी क्या हो जाता है? अल्कोहलिक होता है, एंड फिजिकली अब्यूजेस हर एंड ट्राइज टू पिम्प हर टू ना हिज बॉस, और उसके बॉस को, खुद के बॉस को उसे पिम्प करने की कोशिश करता है। शी गिव्स बर्थ टू राहिल एंड इस्ता, और उसका वहाँ पे क्या होता है? राहिल और इस्ता जो ट्विंस की ये कहानी है ना, वो उनका बर्थ उसको जन्म देती है। लीव्स हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को छोड़ के, एंड रिटर्न्स टू एमिनम टू लिव विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर चाको, और जो उसका ब्रदर है उसका नाम है चाको, और वापस आ जाती है। Chaco has returned to India from England after his divorce from an English woman, Margaret। और चाको का भी क्या हो रखा है? मार्गरेट से डाइवोर्स हो गया, वो वापस आ चुका है। एंड सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ पापाजी, और उसके जो पापाजी था, जो फादर थे उनके, उसकी डेथ हो जाती है। द मल्टी जनरेशनल फैमिली होम इन एमिनम also includes पापाजी's sister Naomi Ip, known as बेबी कोचम्मा। और जो पापाजी की सिस्टर है, क्योंकि वो मल्टी जनरेशनल फैमिली है, वहाँ पे बहुत सारी जनरेशन की लोग रहते हैं, और पापाजी की जो सिस्टर है उसका नाम है नाओमी इप, एंड उसका जो नेक्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, बेबी कोचम्मा है। एज अ यंग गर्ल, बेबी कोचम्मा फेल इन लव विद फादर मुलिगन, अ यंग आयरिश प्रीस्ट हु हैड कम टू एमिनम। और जो बेबी कोचम्मा है उसे फादर मुलिगन से प्यार हो जाता है। टू गेट क्लोजर टू हिम, बेबी कोचम्मा कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म एंड जॉइंड अ कॉन्वेंट अगेंस्ट हर फादर विशेस। और जो बेबी कोचम्मा है वो क्योंकि उसे फादर मुलिगन के साथ में रहना है, तो वहाँ पर वो कॉन्वेंट को ज्वाइन कर लेती है, और रोमन कैथोलिसिज्म को ज्वाइन कर लेती है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इन दिस कॉन्वेंट, शी रियलाइज दैट हर वोज ब्रॉट हर नो क्लोजर टू द मैन शी लव्ड। और बाद में जब वो अंदर जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ वो उसके क्लोज नहीं जा पा रही है। हर फादर इवेंचुअली रेस्क्यूड हर फ्रॉम द कॉन्वेंट एंड सेंट हर टू अमेरिका, और उसे अमेरिका भेज दिया जाता है। Because of her unrequired love for Father Mulligan, baby Kochamma remained unmarried for her rest of her life, becoming deeply embittered over time, और वो हमेशा के लिए बिना शादी किए हुई रहती है। Throughout the book, she delights in the misfortune of others and constantly manipulates events to bring calamity। और वो अपना जो टाइम है या खुश होती है लोगों की मिसफॉर्च्यून पर, इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही होती है। Ista's experience factors into the tragic events at the heart of narrative. Rahil's assertion that she saw Valutha in the communist mob causes baby Kochuma to associate Valutha with her humiliation at the protesters' hand, and she begins to harbor enmity towards him. So here the story becomes a little complicated. So Ista's experience factor tragic events at her heart of narrative. So Ista's और बाद में जो राफेल है, Raphael's assertion that she saw Valitha in communist mob causes baby Kochuma to associate Valitha with her humiliation at the protesters' hand, and she begins to harbor enmity towards him. So Valitha, अब यहाँ पे जो next part है story का, Valitha is a Dalit lower caste in India। जो Valitha है वो दलित community से आती है, and Rahel and Ista from an unlikely bond with Valitha and come to love him despite his caste status। और
जो राहिल और ईस्ता हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, एक उनका बॉन्ड बन जाता है वेलिसा से, एंड इट इज़ हर चिल्ड्रंस लव फॉर वेलिसा दैट कॉजेज अमू टू रियलाइज हर ओन अट्रैक्शन टू हिम। और जो अमू है उसका भी जो अट्रैक्शन है वेलिसा से होना शुरू हो जाता है, एंड इवेंचुअली शी कम्स टू लव बाय नाइट द मैन द चिल्ड्रन लव्ड बाय द डे। सो उसके जो बच्चे हैं वो वेलिसा से अट्रैक्ट होते हैं, और इन शॉर्ट कहें तो जो बच्चे हैं वो वेलिसा से दिन में मिलते हैं और वो उससे रात में मिलती है। अमू एंड वेलिसा बिगिन अ शॉर्ट लिव्ड अफेयर दैट कल्मिनेट्स ट्रेजेडी फॉर द फैमिली। अमू और वेलिसा की जो उनका शॉर्ट लिव्ड अफेयर होता है उनकी फैमिली के लिए एक ट्रेजेडी की तरह है। व्हेन हर रिलेशनशिप विद वेलिसा इज डिस्कवर्ड, जैसे ही अमू की वेलिसा के साथ में जो रिलेशनशिप है वो डिस्कवर्ड होती है, लोगों को पता चलती है, अमू इज लॉक्ड इन हर रूम एंड वेलिसा इज बेनिस्ड, और वेलिसा जो है वो भाग जाता है। इन हर रेज अमू ब्लेम्स द ट्विंस फॉर हर मिसफॉर्चून एंड कॉल्स देम माइलस्टोन अराउंड हर नेक। और अमू जो है वो गुस्से में बच्चों को बोलता है कि बच्चे जो हैं वो माइलस्टोन अराउंड हर नेक, एक तरह से उनको अक्यूज करते हैं इस मिसफॉर्चून के लिए। डिस्ट्रॉट राहेल एंड इस्ता डिसाइड टू रन अवे, और जो राहेल और इस्ता जो हैं वो वहाँ से भागने के लिए प्लान करते हैं, और उनके साथ में सोफ़ी जो है वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती हैं। देयर कजिन सोफ़ी जॉइंस देम ड्यूरिंग नाइट एज दे ट्राई टू रीच एन abandoned हाउस अक्रॉस द रिवर। देयर बोट कैप्साइजेस एंड सोफ़ी ड्राउन्स, और उनकी जो बोट है वो ना एक्सीडेंट होता है और सोफ़ी जो है वो डूब जाती हैं। When Margaret and Chaco return from the trip, they see Sophie's body laid out on the sofa, और सोफी की जो बॉडी है उसे मार्गरेट एंड चाको देखते हैं। बेबी कोचम्मा goes to the police and accuses Velitha of being responsible for Sophie's death, और जो बेबी कोचम्मा है वो जाकर पुलिस को ये कहती है कि जो वेलिथा है वो क्या है, सोफी की डेथ के लिए responsible है। A group of policemen hunt Velisa down and savagely beat him for crossing caste lines and arrest him to brink of death। और जब वेलिसा को पुलिस पकड़ लेती है और उसे इतना पीटती है कि उसकी डेथ होने वाली है, द ट्विंस हडलिंग इन द abandoned हाउस विटनेस द हॉरिफिक सीन, और जो ट्विंस है उन्हें इस बारे में पता चलता है। लेटर व्हेन दे रिवील द ट्रुथ टू द चीफ ऑफ पुलिस ही इज़ अलार्म्ड, और जैसे ही वो दोनों के दोनों आकर बताते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो पुलिस अलार्म फील करती है। ही नोज दैट वेलिसा इज अ कम्युनिस्ट, वेलिसा क्या है, एक कम्युनिस्ट है, एंड इज अफ्रेड दैट इफ वर्ड गेट्स आउट दैट द अरेस्ट एंड बीटिंग वर रॉन्गफुल इट विल कॉज अनरेस्ट अमंग द लोकल कम्युनिस्ट। तो अगर ये बात पता चलेगी लोकल कम्युनिटी को कि वेलिसा को बिना बात के पीटा गया है, तो ये क्या होगा, अनरेस्ट का केस हो जाएगा। ही थ्रेटन्स टू होल्ड बेबी कोचम्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्सली अक्यूजिंग वेलिसा, और वो बेबी कोचम्मा को कहते हैं कि फॉल्सली उसको अक्यूज किया गया वेलिसा को उसकी वजह से। टू सेव हर सेल्फ बेबी कोचम्मा ट्रिक्स राहिल एंड ईस्ता into believing that the two of them would be implicated as having murdered Sophie out of jealousy and were facing sure imprisonment for them and their अम्मू। और यहाँ पर स्टोरी में ये हो जाता है कि जो राहिल अनिस्ता है उनको इस बात के लिए कहा जाता है कि वो क्या करेंगे कि सोफी के मर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। She thus convinces them to lie to the inspector that Velitha had kidnapped them and had murdered Sophie. Velitha dies of the injuries overnight, और वो जो बेबी कोचम्मा है वो दोनों ट्विंस को ये कन्विंस करती है कि इंस्पेक्टर को ये झूठ बोले कि जो वेलिसा है उसकी डेथ किडनैपिंग की वजह से हुई है। After Sophie's funeral, Ammu goes to the police to tell the truth about her relationship with Velitha. Afraid of being exposed, baby Kochumma convinces Chaco that Ammu and the twins were responsible for his daughter's death. तो यहाँ पर क्या है कि जो
सोफ़ी के फ्यूनरल के बाद अम्मू पुलिस के पास जाती है और अपनी जो रिलेशनशिप है वेलिसा के साथ उसे बताने की कोशिश करती है। बेबी कोचम्मा जो है वो एक्सपोज्ड होने के डर से चाको को कन्विंस करती है कि जो अम्मू है और उसके ट्विंस है वो उसके डॉटर के लिए, उसकी डॉटर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाको किक्स अम्मू आउट ऑफ द हाउस एंड फोर्सेस हर टू सेंड ईस्ता टू लिव विद हिज फादर। ईस्ता नेवर सीज अम्मू अगेन और अम्मू जो है वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है घर से और ईस्ता को अपने फादर के पास भेज दिया जाता है। अम्मू डाइज अलोन फ्यू इयर्स लेटर एट द एज ऑफ 31 और जो अम्मू है उसकी डेथ हो जाती है। After a turbulent childhood and adolescence in India, Rahil gets married and goes to America और जो राहिल है वो अमेरिका चला जाता है। Then she divorced before returning to Eminem after years of working dead end jobs. Rahil and Ista, now 31, are reunited at the first time since they were children और दोनों के दोनों अब 31 years के हैं और दोनों reunite होते हैं। They had been haunted by their guilt and their grief-ridden past. It becomes apparent that neither twin ever found another person who understood them in the way they understand each other. Towards the end of the novel, the twin have sex, and the novel comes to close with nostalgic recounting of Ammu and Velisa's love affair. And so in this work you need to remember all the names of the characters, not particularly the whole story what happens when for this particular exam we can say, but at least the characters you should know. Next, name of the work you should know: The Ministry of Utmost Happiness. The Ministry of Utmost Happiness is the second novel by Indian writer Arundhati Roy and published in 2017, 20 years after her debut, The God of Small Things. तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बाद 20 years later उन्होंने इसे पब्लिश किया था. 3 more works. The End of Imagination. This is the name of the first essay in 2001 book, and it later used as the title of the comprehensive collection of Roy's essays in 2016. So End of the Imagination is basically the first essay. Listening to Grasshopper Field Notes on Democracy in 2009. Listening to Grasshopper Field Notes on Democracy 2019 is a collection of essays written by Booker Prize winner Arundhati Roy. So this is you can say collection of essays written between 2002 2008. The essays have been published in various left-leaning newspaper and magazines in India. The first edition of the book consists of 11 essays. तो फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ essays था उसमें 11 essays थे, and with an introduction by Roy was published by Hamish Hamilton in India, and the last one is Walking with the Comrades in 2011. Walking with the Comrades 2011 is an eyewitness account of the Naxalite Maoist insurgency by Indian author Arundhati Roy. तो जो ये आपका एक आई विटनेस अकाउंट है नेक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में. The book covers her time in 2010 spent living with Naxalite communist guerrillas deep within the forest of rural Chhattisgarh. तो ये उनकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उससे शेयर करने की कोशिश की गई है जो नक्सलिस्ट के साथ में उन्होंने रहे थे. She argues that India's counter-insurgency known as Operation Green Heart is front for mining corporation to clear away tribal people and to make profit exploit India's natural resources. So with this we end this video. You should go through all the works and the name and the publication years. So see you in next video. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है. जो भी सिंसियरली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपना जो हार्ड वर्क है उसको बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं. हम लोग एक महीने में 25 PDFs देते हैं जिसका कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़. और इसके सिवा आप
हमारे टीचर्स से बात कर सकते हैं 1-to-1। जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में आने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 7409287156। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। टिल देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।